Good morning, my smart learners. How are you all? Fine. Excellent. Beta, before starting our today's topic, first of all, we will do prayer. So, fold your hands and start the prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे वैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना Beta, today again we will do lesson 16 data handling. First of all, we will do an activity related to data handling. Beta, this table shows the result of general knowledge quiz among the students of class 3rd who were divided into 4 houses. बेटे ये टेबल क्या शो कर रही है? ये जनरल नॉलेज क्विज का रिजल्ट शो कर रही है. ठीक है, यहाँ पर 4 हाउसेस हैं. इन 4 हाउसेस में क्लास 3rd के बच्चों को डिवाइड कर दिया गया है. हाउसेस कौन कौन से हैं? अग्नि हाउस, आकाश हाउस, जल हाउस एंड भूमि हाउस. अग्नि हाउस के कितने स्कोर्स हैं? 40. आकाश हाउस स्कोर्स 60. जल हाउस स्कोर्स 40 एंड भूमि हाउस स्कोर्स 50. ठीक है बेटा, ये बेटा मैंने टेबल को बार ग्राफ पर शो किया हुआ है. दिस इज द बार ग्राफ. बेटा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. जो ये स्लिपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है. और जो वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस. बेटा मैंने एक्स एक्सिस पर क्या लिखे? हाउसेस. और वाई एक्सिस पर स्कोर्स लिखे हैं. और बेटा स्कोर्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है मैंने. 10-10 का गैप लिया है हर स्कोर के बीच में. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. अब बेटे अग्नि हाउस का स्कोर कितना है? 40. तो ये बार ग्राफ मैंने कहाँ तक ड्रॉ किया है? 40 तक. ओके. आकाश हाउस का स्कोर कितना है? 60. तो ये बार ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ किया है? 60 तक. जल हाउस का स्कोर कितना है? 40. तो बार ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ किया है? 40 तक. भूमि हाउस का स्कोर है 50. दिस इज द बार ग्राफ अप टू 50. बेटा नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस. मैं आपको क्वेश्चंस बोलूंगी, आप मुझे आंसर्स बताओगे. ओके. विच हाउस स्कोर्स मैक्सिमम? कौन से हाउस का स्कोर मैक्सिमम है बेटा? ये देखिए, ये आकाश हाउस है ना, इसका स्कोर मैक्सिमम है ना.
So the answer is Akash house. Very good. Now next question is, which two houses have same scores? कौन से ऐसे दो हाउसेस हैं जिनका सेम स्कोर है? जल्दी से बताइए मुझे आंसर. यस, अग्नि हाउस एंड जल हाउस. अग्नि हाउस और जल हाउस का सेम स्कोर है ना? ओके, नाउ टेल मी, व्हाट इज द स्कोर ऑफ भूमि हाउस? भूमि हाउस का कितना स्कोर है बेटा? भूमि हाउस स्कोर्स 50. शाबाश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स. ओके, द मिनिमम स्कोर इज ऑफ भूमि हाउस. सबसे कम स्कोर भूमि हाउस का है. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स, क्योंकि भूमि हाउस का तो 50 स्कोर है. ये कम नहीं है ना सबसे. यस, वेरी गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्नि एंड आकाश हाउस स्कोर्स सेम? क्या अग्नि और आकाश हाउस का स्कोर सेम है? जल्दी से बताइए इसका आंसर. फॉल्स. वेरी गुड. अग्नि और आकाश हाउस का स्कोर सेम नहीं है ना बेटा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कोर ऑफ जल हाउस इज 40. क्या जल हाउस का स्कोर 40 है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. वेरी गुड. अभी आपको बार ग्राफ समझ आ गया? ठीक है, और क्वेश्चंस भी आ गए ना करने. ओके बेटा, नाउ you will watch an animation part related to data handling. A bar graph is a graph that uses bars of different lengths to compare data. Here we represent the number of different trees in the park in the form of bar graph. Here are the bars of different lengths. Bar graphs may be horizontal or vertical. This is an example for horizontal bar graph because bars are plotted horizontally. Since the bars are plotted vertically, this is an example for vertical bar graph. All bar graphs need to have these following three parts. They are title, labels, and scale. Title, labels, and scale. Let's see each part of the bar graph in detail. Title. Title tells us what the bar graph is about. The title of this bar graph is Flowers Collected. Labels. Both the sides and the bottom of the graph have a label which tell us what kind of data is shown. Here, number of flowers, Simi, Sanya, and Susan are the labels used for this bar graph. Scale. Scale tells us the number each block is equal to. Here, each block is equal to 1. The scale on the bar graph is very important. Sometimes it counts by ones. Other times the scale can be 2, 5 or 10. Always look at the scale carefully. Let's see how to represent the data in the form of a bar graph. So we are going to represent this data in a bar graph. For that, first we have to give a title explaining what is being represented. Since the information is about the trees in the orchard, let's give the title Trees in Orchard. Next, step 2.
In step 2, draw the horizontal line and the vertical line. The horizontal line is called as the horizontal axis and the vertical line is called as the vertical axis. Step 3. In step 3, we have to mark the scale. The data given here are the multiples of 5. So we have to write the multiples of 5 along the vertical axis, which denotes the number of trees. The point where the horizontal and the vertical axis meet is marked as 0. Start from 0 and then write the multiples of 5 in equal spaces. The scale changes accordingly related to the data. Step 4. In step 4, mark the labels. Mark the labels on the horizontal and vertical axis related to the data. The vertical axis gives the information about the number of the trees. So we mark the label as number of trees. Write the names of the trees on the horizontal axis. Write the names of the trees on the horizontal axis. The last step, step number 5. To represent 30 coconut trees, we can draw a bar extending from 0 to 30 on vertical axis. Draw accordingly for the other trees with equal space between the bars. Now we have drawn a bar graph. Children, follow these 5 steps to draw a bar graph. Next, let's see how to answer questions using the data represented in a bar graph. Look at this bar graph carefully. Let's answer these questions one by one. The first question is the number of people who drink coffee is. For that, look at the bar that represents coffee. This bar extends from 0 to 40. So, the answer is 40. The number of people who drink coffee is 40. The second question is the drink liked by least people is. It mentioned least. So, find the shortest bar in this bar graph. Here, the shortest bar is milk. So, the drink liked by least people is milk. The last question is the drink liked by most people is. For that, look into the tallest bar. Here, the tallest bar is tea. So, the drink liked by most people is tea. Beta, I think today's topic is clear to you through an activity and animation part. Thank you. Have a great day.